अशीच झालं काय करायचं कुठे टिक करायचं तिथून नाम कॅमेरामध्ये बाहेर काढायचं असंच परत क्लिक करायचं इथं. चेक करून बघा. म्हणजे या छोट्यामध्ये हे आलं का ह्याच्यामध्ये ते बोर्डचा नाही ते समजलं मला पण हे काय आलं हा ह्याच्यात दिसायला लागला आणि हे जे आहे ना ते इथे दिसायला लागलं असं झालं. बोर्ड तो तिथं दिसला हा बोर्ड जो आहे ना तो इथं दिसला हा बोर्ड कळला आणि ह्याच्यात दोन लावून बघायचं ना स्टोअरला स्टॉक व्हिडिओ स्टॉक व्हिडिओ आणि ते क्लिक करायचं डबल क्लिक करून इथे हे करायचं स्टॉक व्हिडिओ स्टॉक व्हिडिओ हा स्टॉक व्हिडिओ बघा स्टॉक व्हिडिओ तिथं 3 डॉट आहे ना त्या डॉटच्या तिथं क्लिक करायचं.
हाँ बोलते हैं कि लोगों के पेट में खाने की बात करते हैं मुझे करके भेजो अरे ये लोग सामने का काम करना है हम लोग भी सामने लगे Anyone has an extra textbook on your bench? No one? Then I will finish the other module. Is it okay? We had just almost completed, yes? Yeah. We had almost completed with Supreme Court, right, in the last class. Some of the points are remaining. Move fast. That we will and then proceed towards this item. So one point that was remaining among the chapter was the rule of law. Yes. Anyone would like to read about the passage rule of law? Page number 206. Pink box. So that counts. Yeah, the terms rule of law. Yes, sir. Judgment. A judgment must be predicted by a court determining the rights of the parties in the proceeding. That has been explained with us. Let's read about the rule of law. Rule of law. Supremacy of law implying that no person can be made to suffer in body or goods except for a breach of law established in the ordinary court of the land. Constitution grants wide powers to the High Court and the Supreme Court for the preservation of the rule of law. Okay, so what basically rule of law means is, if you have not done a crime, you shall not be punished. It is as simple as it is. Okay, only the person who has done some criminal act or it has breached some rule or some law, some legal law has been violated, only such persons can be punished. You were not there in my last class. Why? Because this I only know two words. Then
Basically, rule of law means under this class, if you want to talk, please get out. I have no problem. If you have come here to do your time pass, you can surely get out of my class and do whatever you want. But if you are sitting here, please don't make me, remind you every now and then. What do you think? Teachers standing here are just wasting your time, you feel? Just now, I was getting scolding there. You only know. I'm not because But anyways, I am finding only this one class to be, so much of non-cooperation type of thing you all do when a teacher enters the class and tries to teach you. समझ में नहीं आता बेटा आप लोगों को मैं क्या पढ़ाती हूँ, इसीलिए आप ऐसा करते हो क्या? समझ में आता है ना आप सबको? पिछले क्लास में आप क्या कर रहे थे, आप जानते हो? फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा आप लोगों से, बिकॉज आई फील जाने दो, छोटे हैं, बट 10th स्टैंडर्ड में हो आप। आप लोगों को सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो बाहर जाके जो आपको बातें करनी है, अपना राउंड टेबल डिस्कशन करना है, करते रहो। आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट यू ऑन दैट, बट इफ यू आर इन माय क्लास, यू हैव टू फॉलो द क्लास decorum. Supremacy of law implying that no person can be made to suffer in body or goods except for a breach of law. Suppose there is a law, yes, there is a law that has been established that you are not supposed to do a robbery, you are not supposed to do a crime like murder, you are not supposed to break traffic rules. Yet if you have done any of this, that means you have broken a law. Yes or कोई कानून आपने तोड़ा है। अगर आप कोई कानून तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कौन पनिशमेंट देगा आपको? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और whichever law is ruling over that land, that will give you the appropriate punishment for that. रूल ऑफ लॉ में बेटा ये चीज सबसे याद रखना, सबसे पहली बात याद रखना कि अगर कोई राजा है तो उसे कम पनिशमेंट मिलेगा, और कोई अगर नॉर्मल वर्कर है तो ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। ये चीज पूरी तरह गलत है। इन रूल ऑफ लॉ देयर इज ऑलवेज इक्वल पनिशमेंट, चाहे वो राजा हो या कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन हो, वर्कर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। If he has done robbery, both of them will be punished according to the rules and laws that are sanctioned for robbery. Okay, penal code में बता दिया गया कि किसे क्या punishment होनी चाहिए, उसी हिसाब से punish करते हैं। Then the Constitution grants wide powers to the High Court and the Supreme Court for preservation of rule of law. अब rule of law को preserve भी करना है, simply we are making rule of law है, ये कहते हैं। Only if you are going to behave properly, sit discipline in the class, maintain discipline, then come. Otherwise, you can stand outside and you can do your talking and discussion. Settle down quickly. Take your notebook in whichever you are writing these notes. I want it on your table. And rest all books besides your textbooks, all other books should be in your bag. Only your textbook or your UTV book should be kept on your table. It's high time, class. It's high time. It's your 10th standard. It's not my 10th standard. You all think how you are going to behave, how you are going to study. Okay, so Supreme Court and this High Court will have the orders and the powers, wherein it can see to it that these powers are well used or not. This rule of law तो बना दिया, पर इसको अच्छे से execute करने की जिम्मेदारी किस पर होगी? With the High Court and the Supreme Court. It is that High Court, and you get a message if you are not able to give the word. So it's basically the High Court and the Supreme Court. So whatever rule of law means is that nobody is greater or smaller when it comes to law. It's everyone who is same in the eyes of law. अगर मान लो कल को अमिताभ बच्चन ने कोई crime कर दिया, let's take it for an example, then he will escape the punishment? No, he will also be punished the same way as any ordinary citizen of India is going to be punished. So this point was remaining, and there is nothing that you can omit in Supreme Court chapter. Online students, am I audible? Are you able to listen to me?
Yes, miss. Yes. Yes. Okay. So let's come. One student from online class that I asked me about the examples for different grids. Yes or no? One of you had asked me. I just gave example about the habeas corpus grid, and the remaining grids का कोई example है क्या? Like one student had asked me. Is it from this class? Yes or no? Okay. Anyways, if you are interested, you can pay a little attention to this part of the chapter wherein I will be giving you some examples of writ of mandamus, certiorari, prohibition, quo warranto, and habeas corpus is already discussed. Class, what happened? Writ of mandamus was one example I can give you. But basically, what is a writ of mandamus? It means we order, yes or no? That is, the Supreme Court is ordering someone to do something. Here in this case, there was a person named Virendra Kumar. He had, paid regular telephone bills, and he had got a, telephone connection for his family or whatever his home was. But due to some reasons, the telephone authorities had cut down his telephone connection, and they were not giving him proper connection for it. So उसने क्या किया? He moved to the courts. Basically the high court. He went to the high court and he said कि मुझे टेलीफोन का कनेक्शन नहीं मिल रहा है in spite of me paying all the dues regularly. So the high court passed the writ of mandamus, thereby ordering the telephone authorities to give him a regular connection. Did you follow what is writ of mandamus? Yes. Okay. Then next comes writ of prohibition. Writ of prohibition is something wherein you stop a lower court or a subordinate court by doing some particular act. Now here in this case, you can take an example of see, when you have, sometimes it happens that in rural areas or villages, what they do, some builders, they take up a land which is not actually belonging to them. वो उनका जमीन नहीं होता है, उनके पास उसके पेपर वर्क्स नहीं होते, और वहां पे वो क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे में वो जमीन तो उनकी है ही नहीं, जब उन्होंने खरीदा नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, तो that particular land doesn't belong to that particular builder that he can start doing any construction work over there. Yes or no? But he has already started construction. In that scenario, if the court comes to know because of any other citizen informing them, then the court can issue a writ of prohibition. And in simple words, this is called stay order. Yes, have you heard about this word stay order? उस building पर तो stay order आ गया है. Yes or no? They say like that. Whenever there is some legal difficulty and the paperwork is not clear, why I'm hearing some murmurs there? You get up from there. Not you. You. Get up. And you will sit there where I tell you. Unless and until you move from there, I'm not going to continue my lesson. So be quick. Sit here. Okay. So whenever we say see or hear such terms, wherein they say कि उस building पर तो stay order आ गया है, उस building को बांधने नहीं दे रहे हैं. You must have even seen in Mumbai there are so many buildings जिनका काम आधा अधूरा छूट जाया रहता है, और बहुत सालों से उसको कोई काम ही नहीं हो रहा रहता. हम लोग बहुत छोटे रहते तभी से वो बिल्डिंग देखते रहते, बड़े हो जाते फिर भी वो बिल्डिंग का काम नहीं बनता. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज समवन has brought a stay order over it. उसका जो केस कोर्ट में है वो क्लियर नहीं हुआ. It is because of that reason. That's writ of prohibition example. Then let's take another example. That's writ of certiorari. To explain this, I have to give you a little complex example. Writ of certiorari is to be informed. To be informed. Now, they are the example of cases. In Punjab, there is Hoshiarabad, some place like that, right? So in Punjab, what happened? There was an election conducted. Two contestants were standing for the election. Both of them got certain votes. One among them won the election and another one lost the election. So the person who collects and calculates all these votes for a particular election in a particular area, he is called the returning officer.
Okay, and he will decide which candidate is the winning candidate in that particular area. So the returning officer took all the votes, he collected the votes from the ballot box, he decided, he calculated, and he came up with the conclusion that A has won the election and B has lost the election. So B got offended that how come I lost the election, and he moved to the court asking that there is some discrepancy with the calculation of the ballot boxes, and I have not received 300 votes which were towards me. मतलब ये 300 वोट मुझे मिलने चाहिए थे और मुझे मिले नहीं है, इसीलिए मैं ये केस या ये जो भी अपना इलेक्शन था वो हारा हूँ. This is what he goes and he tells in the court. Then the court is like, even if you get 300 votes, you were not going to win this election, because there was a big marginal difference between the winning candidate and the losing candidate. But still the person feels that here the point is not about winning or losing. Here the point is about how many votes I got. And so he later on went to the Supreme Court, and the Supreme Court, issued a writ of certiorari asking the election commission, that is the returning officer, to come there and explain what actually has happened. Okay, because Supreme Court wanted itself to be informed with this particular case कि क्या हो रहा है, क्या हुआ actually, कितना वोट किसे मिला, क्यों नहीं जीता, कौन जीता, वो क्यों जीता. All these things Supreme Court wanted a clear cut explanation, and so it issued a writ of certiorari. Did you get this example? समझ में आया? Yes. Then next is quo warranto. Quo warranto means by what authority are you holding this post? Whenever it is a point of discrepancy that okay, so quo warranto में एक example दे रही बेटा. This quo warranto writ is issued when there is a post that has been a post which has been already given to a government officer. He is holding that post, or he has been newly appointed on that post, and then there is some discrepancy regarding this person should not have been appointed, या इसका appointment गलत है, या इसको किस authority के basis appoint किया गया है. When these questions come up, then this quo warranto is issued. There is a famous case of quo warranto getting issued is in University of Mysore. Once there was a vacancy for some professors. Okay, so they gave an advertisement in the newspaper that they require some professors, and they appointed some professors for that. Later on it was find out that एक ऐसा रीडर अपॉइंट हो गया था फॉर इंग्लिश पोस्ट के लिए. रीडर एक पोस्ट होता है यूनिवर्सिटी में. उस रीडर के पोस्ट पे जो व्यक्ति अपॉइंट हुए थे उनके पास शायद सही क्वालिफिकेशन नहीं है. इस बात का there was an idea, ऐसा एक क्लू था कि लोगों के पास कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये सही तरीके से नहीं हुआ है. Without having a proper degree and qualification, this person has been appointed. So then quo warranto writ was issued by the High Court, and it asked that person to come and show with what authority are you been appointed as the reader of this university. समझा? Any doubt about quo warranto? Then we'll start with High Court chapter. Since High Court is continuation of Supreme Court, we cannot take any other chapter in between. Otherwise, I would have opted out for that Prime Minister chapter one child had requested, I think, this class only. Yeah. But High Court is again a continuation chapter of Supreme Court. If I take in between Prime Minister chapter, then the link will be again lost. It's just a matter of 2 classes. We'll finish off High Court and then we can go to any other chapter as you wish. How many states do we have in India?
29, 27, 26, 28. 28. We have 28 states. How many states? 28. And how many union territories? 9. 9. Online students? 8. 10. 7. 8. Count. Delhi. Count and show. Daman and Diu. Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli, all together one. But that's But it is a union territory. It is a union territory. Lakshadweep, the Andaman and Nicobar Islands, Delhi, Chandigarh, Pondicherry, and Jammu Kashmir and Leh Ladakh. 9 कैसे हो गए बेटा? एक कौन सा एक्स्ट्रा पकड़ लिया आपने? See, Delhi, Chandigarh, then Dadra, Nagar Haveli with Daman and Diu. It's both conjoined. दोनों साथ में है बेटा, अलग अलग नहीं है। हाँ, दोनों एक ही है बेटा। आप इसको अलग अलग पकड़ोगे तो आपको 9 मिलेगा, but these both have been merged. Okay, then Ladakh, then Jammu and Kashmir, Pondicherry, Andaman Nicobar Islands, Lakshadweep Islands. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Yes, correct. So we have 8 union territories and 28 states. See, initially what happened because Jammu and Kashmir was under the category of state. पहले से क्या कहते थे हम? State कहते थे, लेकिन अब क्या हो गया ये? Union territory हो गया. So in spite of we having 28 states, we have only 25 high courts. How many high courts? 25 high courts. And amongst these 25 high courts, or these you can say 28 states, there are 4 states which do not have a high court. Class. 4 states do not have a high court. These 4 states are Goa, Mizoram, Nagaland. It doesn't have its own this thing, beta. It doesn't have its own high court. Yes or no? Goa has a bench in Mumbai, Bombay, and Arunachal Pradesh. Goa is included inside Bombay High Court, and all these 3. No, but it is still Bombay only. Mumbai is the name of city, but High Court has still got the name as Bombay only. That has not been changed. And Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh all are included in the High Court of Guwahati. Guwahati, High Court of Guwahati, which is also known as High Court of Assam. Note this point, everyone.
मैम पहले जम्मू कश्मीर में वो हाई कोर्ट रहा हुआ तो उसका क्या हुआ? वो अभी भी है, इसीलिए तो एक हाई कोर्ट बढ़ गया ना। 25 हाई कोर्ट ही है ना अभी भी हमारे पास। स्टेट कितने हो गए? 28। तो 4 स्टेट के पास तो हाई कोर्ट नहीं है, तो कितना हाई कोर्ट होना चाहिए था? 24 होना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है ना। तो जम्मू कश्मीर वाला हाई कोर्ट जहाँ है वही है। पर ईमेल एडिट करता ना थर्ड आई एक्सपीरियंस No issues. That high court is another part. This is another part. जो रूल कर रहा है वो प्रेसिडेंसी रूल है. Judiciary is a different thing. So they will manage it under that part. Very correctly. इस लश्कर भी और What? Yeah, maybe some spelling mistakes. This D I have to remove, right? Yeah, I am very right, beta. Yes, it is It is right. D is there. Checking out this. Last two benches, what happened? So in your page, textbook page 212, you can see Lakshadweep Island is there. That's what I've written, beta. One more of the very just given in your textbook. Column number 13, you see. So let's go to the next part. Till you all decide and judge me on my spelling, I will just proceed with the next part. The high courts. Instead of asking anyone of you to read, it's better that I read it myself. The Constitution of India provides for a high court for each state. Each state has been given this provision that they can establish their high court. But because of their low population, where the population is very less as compared to the requirement to establish a high court, in such scenario, they will include it with some other state high court. Did you get it? Since the population is less, they have not given another high courts for these 3 or these 4, and they are being merged with the high court of other states. Not necessary, beta. There are some district courts, they get their issues solved there itself. And the traveling distance is not very much. These states are located very nearby, Mizoram, Meghalaya and all that. So they can, for high profile cases, if needed, they can travel. Okay. Besides that, there are also provision for a judicial commissioner. When you talk about Goa, you have a judicial commissioner there, but we'll come to that point in the later part of the chapter. Okay. The Parliament may, however, establish a common high court for 2 or more states or union territories. When you talk about 2 or more states like this, in this scenario, here they have established a common high court, right, for High Court of Guwahati, which is present in Assam for all these 3. Yes or no? Now, this depends on the area and population to which a high court has to serve and the amount of work it has to handle. Naturally, if the cases
if the population is less, the cases will be less. Yes or no? जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, आबादी ज्यादा है, वहां लोग ज्यादा झगड़ा करेंगे. झगड़ा ज्यादा हो रहा है, डिस्प्यूट ज्यादा हो रहा है, तो कोर्ट्स की ज्यादा काम होगा, तो उसको वर्कलोड बढ़ जाएगा. कोर्ट्स को वर्कलोड बढ़ जाएगा तो उसका एक अलग इंस्टीट्यूट बना के, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, अलग जजेस अपॉइंट करके उनसे काम करवाना पड़ेगा. बट अगर पॉपुलेशन ही कम है तो नेचुरली डिस्प्यूट्स कम होंगे. डिस्प्यूट्स कम हो रहे हैं तो कोर्ट के लिए वर्कलोड बहुत कम रहेगा, और अगर बहुत कम वर्कलोड है तो दे विल मर्ज इट विद अदर स्टेट्स हाई कोर्ट. There are 25 high courts in India, including those having jurisdiction over more than one state. Like if you see this page, textbook page, this, if you see, you can come to know that Guwahati is having the jurisdiction of Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh. Yes, all these things are written here. Then if you see Bombay High Court, it has Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Goa as its jurisdiction. And then if you talk about Madras, you have Tamil Nadu, Pondicherry in its jurisdiction. Punjab and Haryana High Court will have Punjab, Haryana and Chandigarh, which is a union territory. Chandigarh is a union territory, that is also included. Punjab और हरियाणा दोनों अलग states है बेटा, yes or no? उन दोनों का एक ही high court है. Like we have for Maharashtra and Goa, one single high court. Punjab and Haryana also has one single. Yeah, that's Chandigarh is the same capital for them. Anyways, let's come back. There are 25 high courts. Kerala High Court filed in Kochi, not in Kerala. It is in Madras because Madras, Kerala is in, where it is, Kerala is in Kochi, because Kochi is, maybe they are having that particular road transport connectivity that they have established it there. Yes or no? अगर आने जाने की सुविधा नहीं होगी किसी और पर्टिकुलर सिटी में, तो वहां आप कोर्ट एस्टैब्लिश कर दोगे तो क्या फायदा होगा उस कोर्ट का? पर वहां नहीं किया है. नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा कैपिटल में ही होगा. कैपिटल में उतनी जगह नहीं होगी तो कोर्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, देन फिर भी आप वहीं घुसाओगे, उस कोर्ट को वहीं बनाओगे. दे विल गेट सम अदर सिटी एज लैंड सैंक्शन. यस और नो? सो इट इज एन इंटरनल स्टेट मैटर that they will decide where they are. Each high court considers one point I missed out. Yeah, among the union territory, only Delhi has its own high court. Yes, all these union territories we discussed, amongst them only Delhi will have its own high court. Yes or no? All other UPs are seen somewhere or the other, they are adjusted. On that page, are you able to see 212? See Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu and this thing, Dadra Nagar Haveli and Daman Diu, they are brought under Bombay bench. Yes. And if you talk about what else, Jammu and Kashmir and Ladakh, although they are having this thing, same court, but it is altogether a union territory, so they will consider it to be as a union territory undertaking. Then Lakshadweep is a union territory, it is under Kerala court. Puducherry is again a union territory, they have brought it under which? Madras court, yes or no? Then Chandigarh is a union territory and they have brought it under Punjab and Haryana. Okay. Composition. Each high court will consist of a chief justice and such other judges as the President of India may appoint from time to time. Whenever we talk about a high court, we have to understand that there are two major positions, Chief Justice of India and the other judges. Similarly, as we saw in Supreme Court chapter, yes or no, there was a Chief Justice and the others were the judges. How many Chief Justice we have? Usually we have one Chief Justice. And the number of judges for your high court, I think they have not specified it. Yes, they have not specified about the high court judges because it varies from high court to high court. So they have not specified that. Then besides, the president has the power to appoint additional judges. Class. What?
क्या Supreme Court has the highest jurisdiction with us. Supreme Court is the one which is called to be apex court. If it feels that any of these high courts, you have got that list, any of that high court is going beyond its jurisdiction, or if it is working in terms which is not, very perfect to the constitution, it can intervene and it can transfer the case. Lower court से case transfer करके अपने पास ला सकते हैं. Let me give you just an example for that. ये अयोध्या इंसिडेंट तो आप सबको पता होगा, yes or no? So basically ये जो केस था वो तो यूपी हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, because अयोध्या is the part of उत्तर प्रदेश, yes or no? But ये गया कहाँ? अल्टीमेटली जजमेंट किस कोर्ट से आया हम लोग को? सुप्रीम कोर्ट से आया. yes. सुप्रीम कोर्ट से क्यों आया बेटा? हाई ऑर्डर कोर्ट, yes, okay. But सिर्फ हाई ऑर्डर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट हाई प्रोफाइल क्यों? दो रिलीजन में फाइट था. यस, वेरी गुड. दो रिलीजन में फाइट था एंड वॉट एवर द डिस्प्यूट इज, अगर वो केस हाईकोर्ट के पास रहता, यानी यूपी हाईकोर्ट के पास रहता, तो देयर वुड हैव बीन मोर चांसेस ऑफ बायसनेस इन द ओपिनियन एंड जजमेंट. बायसनेस का मतलब हो सकता है वो किसी एक ही रिलीजन को फेवर करे और दूसरे रिलीजन को कंप्लीटली इग्नोर कर दे. तो ऐसा ना हो, इसीलिए क्या किया गया, उस केस को शिफ्ट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर दिया. और ये शिफ्ट करने का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है. कैन शिफ्ट, किसी भी हाई कोर्ट से वो केस को अपने पास ले सकते हैं. देन हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जजेस एंड अदर जजेस व्हिच आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Besides the CJI and the judges, you also have additional judges. हर हाई कोर्ट का अपना एक स्केड्यूल, हर हाई कोर्ट का अपना एक स्केड्यूल होता है. स्केड्यूल इन द सेंस कब कौन सी केस की हियरिंग करनी है, कब कौन से केस को देखना है. बेटा आपके हाथ में क्या है? मोबाइल फोन है. नीचे क्यों रख के लिख रहे हो? अच्छा, क्योंकि आप जब नीचे देखते हो मुझे लगता है शायद आपके हाथ में मोबाइल. सो एनीवेज, तो एडिशनल जजेस क्यों अपॉइंट करने पड़ते हैं? इट्स बिकॉज whenever a court gets over workload, और उसका एक जो स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल के हिसाब से वो उन केसेस को क्या कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो naturally we come to know that the court is facing shortage of time हो रहा है. पर केसेस तो उतने टाइम में सुनने पड़ेंगे. आप हमेशा के लिए केसेस क्या पेंडिंग तो नहीं रख सकते, बिकॉज द पार्टी who has come to the court taking that particular case, फिर अगर आप ज्यादा डिले कर जाओगे तो क्या हो जाएगा? दोनों पार्टी बूढ़े होकर मर जाएंगे, पर उनको जस्टिस ही नहीं मिलेगी. अगर ज्यादा ऐसा होता रहा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कोर्ट पर से भरोसा लोगों का उठ जाएगा कि वहां जाने से तो कुछ होता नहीं, वहां तो वैसे ही लाइन लगी है केसेस की, हमारा केस कौन लेगा, हमारा केस कौन सुनेगा. ऐसी फीलिंग आएगी कि, तो ऐसी फीलिंग ना आए और केसेस क्या हो जल्दी जल्दी क्लियर हो, इसलिए क्या करना पड़ता है? एडिशनल जजेस को अपॉइंट करना पड़ता है. स्टूडेंट्स प्लीज डोंट रीड योर बुक व्हाइल आई एम टीचिंग. बाद में आप पढ़ लेना, चेक कर लेना सारे पॉइंट्स कवर हुए या नहीं, बट व्हाइल आई एम टीचिंग प्लीज कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड. तो एडिशनल जजेस को जो अपॉइंट करते हैं वो अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट करेगा. Then besides these additional judges, there is also an acting judge. या acting judge के बारे में भी बात की थी हमने. Yes, yes or no? We had spoken about it. Acting judge बेटा वो होते हैं, क्यों हंस रहे थे आप ही? क्यों हंस रहे थे? किस बात की खुशी हो रही थी? नहीं, हंसना गलत बात नहीं है भाई, बट आप कभी भी ऐसे अचानक हंसोगे तो लोग पूछेंगे ना बेटा क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो. ओके, लेट्स कम बैक. एक्टिंग जजेस, मान लो कि जो सीजेआई है या जो जजेस अपॉइंटेड है वो भी इंसान ही है. यस और नो? उनकी तबीयत खराब हो सकती है, सर्दी जुकाम खांसी होती है ना. आप लोगों को तो सबसे ज्यादा होती होगी छुट्टी लेते समय. ये तो हाँ भी कह रहा है, उसको होता है बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी. तो ऐसे अगर सीजीआई में क्या हो गया, एब्सेंट हो गए तो
सब्स्टिट्यूट में क्या करेंगे, एक्टिंग जजेस काम करेंगे, उनके जो भी काम पेंडिंग है वो कौन करेगा, एक्टिंग जज करेंगे। और वो कितने दिनों तक काम करेंगे, जितने दिन जो रेगुलर जजेस हैं, जो रेगुलर सीजेआई है वो छुट्टी पर है, सिर्फ तब तक वो काम करेंगे। एज सून एज दे रिटर्न बैक, ये फिर भी जाएंगे क्या वहां, नहीं, फिर वो अपने जो रेगुलर जजेस है वो अपने काम को वापस टेक ओवर करेंगे। समझा? इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। Additional judges for a temporary period not exceeding 2 years for clearance of areas of work in a high court. तो ये एडिशनल जज जो अपॉइंट होते हैं वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, 2 इयर्स से ज्यादा इनकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं करा सकते। एरियर्स ऑफ वर्क मतलब जो पेंडिंग काम है, जो पेंडिंग है जिसको कंप्लीट करना है, जो वर्कलोड बढ़ रहा है। The acting judge when a permanent judge or other than the chief justice is temporarily absent or unable to perform his duties or is appointed to act temporarily as a chief justice, the acting judge holds office until the permanent judge resumes his or her office. तब तक permanent judges आ नहीं जाते, acting judges उनके काम करें। समझा यहाँ तक? any doubt? बोलो। रोज रोज छुट्टी नहीं लेता है, तब नहीं आते तो कौन क्या करते हैं, एक्टिंग जजेस। नहीं बेटा, एक्टिंग जजेस ऐसे नहीं बैठे रहते। कोई कोर्ट में अगर जजेस की ज्यादा हो गए हैं तो वहां से सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे। जैसे तो गवर्नमेंट जॉब, जैसे जजेस का गवर्नमेंट जॉब होता है, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होती है, पोस्टिंग होती है ना अलग अलग जगहों पे। तो अगर किसी एक कोर्ट में काम कम है और जजेस की संख्या ज्यादा है तो वहां से 1 या 2 जज को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। या फिर मान लो कोई सपोज कोई जुडिशियल ऑफिसर है, जुडिशियल ऑफिसर इन द सेंस कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर कोई जज है तो उसे भी सब्स्टिट्यूट कराने ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट का कोई जज है तो उसको सब्स्टिट्यूट कराने ले जा सकते हैं। समझे? एनी डाउट? तो वो कोई ऐसे ही बैठे हुए लोग नहीं है बेटा, उनके पास उस समय वर्कलोड कम होगा तो ले जाए। क्या हैपेनिंग सुप्रीम कोर्ट सोबत आपने ध्यान ही नहीं दिया, हैपेन हुआ था, हमने क्लास में बात की थी, एक्टिंग जज, एडिशनल जज। पर आप क्या कर रहे थे, आप पीछे बैठे हंसे जा रहे थे, तो आपको पता ही नहीं चला कि एक्टिंग जज कब आए कब गए। देन क्वालिफिकेशन की बातें करें तो सबसे पहले बेटा क्या होना चाहिए, citizen of India। सेकंड क्या बोल रहे हो बेटा, जोर से बोलो। Not 25 बेटा, he should not be over 62, should not be over 62। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या था रिटायरमेंट एज, 65। क्लास अंधेरे में था क्या जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट 65, 62। बाकी सबके आंसर इतने गलत क्यों हुए? 65 एक ने बोला बाकी 2 सालों को 75 तक ले गए रिटायरमेंट। हाँ 85 भी गए, क्यों 75 तक मैंने सुना, 75 मैंने सुना। हाँ क्यों, आपको 10 साल बढ़ा दिया आपने जजेस का, वो भी बिना बताए, गवर्नमेंट को बताया भी नहीं, आपने बढ़ा दिया अपने क्लास में। कहाँ ध्यान देते हो तुम लोग? आई मीन ओके फॉर फन इट्स ओके, बट वेयर आर यू एक्चुअली, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर फ्यूचर? बेटा आपको क्लास में अगर ध्यान नहीं दोगे, अभी भी देखो वो लोग नीचे कुछ गिरा रहे और उठाने पे लगे हुए, मतलब डांटोगी तो भी हम इतने मतलब शेमलेस है कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो बस डांट सुनते रहेंगे आप। टू मच बेटा, आई एम गोइंग टू लूज समथिंग, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है? मैं जो आप लोगों को डांटने में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना, उसमें मेरा कुछ बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मेरा। अगर किसी का कुछ लॉस हो रहा है तो आप लोगों का लॉस हो जाए। समय रहते समझ जाओ, 10th की क्लास है ना ये, और फिर भी ऐसे बिहेव करो जैसे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हो।
अच्छा, एक बात बताओ, असम सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज क्या थी? 65 इयर्स थी, लेकिन यहाँ कम क्यों है? यहाँ पे भी 65 क्यों नहीं रखा? सोचो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन वुड यू लाइक टू आंसर मी व्हाई 65 नहीं रखा यहाँ पे भी? यहाँ पे 62 क्यों रखा? क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट के अलग कुछ साल मानवा हाई कोर्ट में काम करते हैं। वो जिनमें लॉ बना तो उसी से जाके पूछूं, आपसे ना पूछूं। थोड़ा इसका आंसर सही था, व्हाइट शर्ट का आंसर सही था। तो देखो बेटा, जब मतलब हाई कोर्ट के, ध्यान दो ना, अभी हाई कोर्ट है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। कोई आदमी यहाँ से रिटायर हो गया 62 इयर्स की एज पर, और यहाँ का रिटायरमेंट कितना है? 65। तो बीच में उसको थोड़ा बफर टाइम मिल रहा है ना, 3 इयर्स का मिल रहा है कि? तो अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज काम कर सकता है, यस और नो? अगर दोनों साथ साथ रिटायर हो गए होते तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ही नहीं आते, बचते ही नहीं, कौन आके फिर वहां काम करता है, यस और नो? हर कोई जहाँ है वही काम करके खुशी से निकल जाता, पेंशन तो मिल रहा है दोनों जगह से। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आने तो देगा, वो तो बेटा एज के साथ, आपकी नजर से वो बुढ़े होंगे, हमारे नजर से वो एक्सपीरियंस्ड है। बेटा रिटायरमेंट एज है ना ये, तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाने का या हाई कोर्ट से बाहर जाने का एज डिस्कस कर रही हूँ मैं। अंदर आप कभी भी चले जाओ, इट्स अप टू यू। आप अगर डिजर्विंग हो, आप उसके एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, तो यू कैन गो वेरी यंग आल्सो। एज सून एज यू कंप्लीट योर लॉ ग्रेजुएशन, आप एज एन एडवोकेट ज्वाइन कर सकते हो। बार एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। वंस यू डू ऑल दैट एंड क्लियर योर एंट्रेंस एग्जाम्स, यू कैन गेट इनटू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। करोगे बेटा? ओके, सो ये 3 साल का बफर क्यों देते हैं? ताकि हाई कोर्ट से निकलने के बाद उनको कम से कम 3 साल का टाइम पीरियड रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करे और वहां पर काम कर पाए, यस और नो? उनको अपॉइंट कर से वैकेंसी रहेगी तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, उसके अभी तो मैं बता रही थी जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है। क्या नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कभी कभी क्या हो जाता है, हाई कोर्ट से कोई वेकेंट, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी है, जज चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं है, तो हाई कोर्ट से किसी भी जज को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और वो तो खुशी से जाएगा, बिकॉज इट्स अ प्रमोशन फ्रॉम हिम। हाई कोर्ट से अगर किसी की पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इट्स अ प्रमोशन फॉर दैट पर्सन, सो दे विल गो हैप्पीली। तो ऐसे क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो गया। और हाई कोर्ट में जो वेकेंट पड़ी है सीट, उसके लिए आगे के कैंडिडेट्स आ रहे हैं ना। मतलब वो पहले हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में आया तो दोनों साइड से पेंशन, मतलब अगर रिटायर नहीं बेटा, जहां से रिटायर होंगे ना बस वहीं से पेंशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होगा वहां से नहीं, दोनों जगह से नहीं मिलेगा। आप मान लेते हैं हाई कोर्ट से कोई जज रिटायर हुआ है और उसके पास जो 3 साल का टाइम पीरियड है, उस 3 साल के टाइम पीरियड में उसका पेंशन शुरू हो जाता है। बट इन केस उसने जॉब ले ली एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, तो उसकी पेंशन इमीडिएटली उस महीने में रुकवा दी जाती है और उसकी सैलरी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि वो तो ज्वाइन कर गया ना सुप्रीम कोर्ट, वापस पेंशन, और वो ज्यादा पेंशन रहेगा। बिकॉज कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजेस के पेंशन जो है, हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी थोड़ी कम रहती है एज कंपेयर्ड टू सुप्रीम कोर्ट, यस और नो? after retirement from Supreme Court, can you fight a case? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो भाई कैरियर, एक बार आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर बाहर आ गए तो यू आर नॉट अलाउड टू अगेन गो बैक इनटू एनी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नहीं, उसकी भी एक परमिशन नहीं है। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही थी, मेरा क्लास 16 था क्या? हमको पता है कि जजेस नहीं बन सकते लॉयर, पर कोई लॉयर रहेगा कोई केस के लिए तो। मैं क्या बता रही हूँ, जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, एक बार रिटायर हो गए तो वो लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो घर पे क्यों बैठेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, वहां पे ट्राई करेंगे, वहां नॉमिनेशन भेजेंगे। बस सुप्रीम कोर्ट पे आप समझ गए, यही पे अटक गए। आगे भी तो है बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन का बॉडी है, ये सब दे आर मच मोर थिंग्स टू डू। कैरियर एज अ टीचिंग ले सकते हैं, वो इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है, वो कुछ पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ट्रेन कर सकते हैं लॉ ग्रेजुएट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स।
मैम अगर कोई लॉयर है उसका 65 हो गया तो एज अ लॉयर उसने रिटायरमेंट ले लेना है, उसने कमा लिया एज अ लॉयर। किसके लिए? लॉयर्स को एज लिमिट नहीं होती, पर अगर 65 के बाद वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी, वो रिटायरमेंट ले सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो 20 पे भी रिटायरमेंट ले सकता है। For lawyers there is no age limit बेटा, they can work as much as they can। मैम कोई जज रिजाइन करता है, कोई जज रिजाइन करता है तो किसमें? लॉ प्रैक्टिस कर सकता है। कोई जज कहाँ से? हाई हाई कोर्ट से अगर कोई जज रिजाइन हो रहा है तो मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ क्या समझा रही हूँ मैं? वो गया ना सुप्रीम कोर्ट, उसके जाने के रिजाइन करने के बाद भी अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में वापस नहीं जा सकता। मैम लॉ प्रैक्टिस कर बेटा सुनो तो मेरी बात, आप इतने कंफ्यूज मत हो। सुनो, जब आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हो तो आपका लॉ करियर इन इंडिया इट इज अ स्टैंड स्टिल। आप वापस किसी कोर्ट में जाकर अपील्स नहीं कर सकते, जज की पोजीशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर कंप्लीटेड एज 60। अगर एडवोकेट हो तो आप जिंदगी भर प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। बट अगर आप हाई कोर्ट से एज अ जज रिटायर होते हो तो इन 3 सालों के अंदर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। और अगर इन 3 सालों में आप सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बन पाए तो आप नहीं बन सकते फिर वापस, क्योंकि 65 इयर्स इज द एज लिमिट फॉर रिटायर। और एक बार रिटायर हो गए तो खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके इस पॉइंट पर और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है आपके टेक्स्ट बुक में। नाउ he has to hold a judicial office in the territory for India at least 10 years। judicial office कौन सा ऑफिस है बेटा? Yes, online kids, would you like to tell me? Yes, online students, can you hear me? Am I audible? Yes, good. The judicial office is something where you can say a district judge होता है, district courts होते हैं, पता है आप लोगों को? Yeah. Then it might be a session court judge, or it can be someone who is a magistrate। ये सारे लोग क्या है? जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने वाले लोग हैं। इनके पास अगर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ये क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। Get me? This can't be taken to Supreme Court because ये सारे लोअर कोर्ट है। जिस हाई कोर्ट में अगर उसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। But in rare cases में हो सकता है यहाँ से भी लेना है किसी को सिलेक्ट करके, because of exceptional knowledge in the field of jurisdiction and law they might take, but it happens rarely because these are district court यानी lower court है। तो पहले प्रमोशन इनका हाई कोर्ट में कराएंगे, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। Then he has been an advocate of high court for at least 10 years। अगर ये नहीं हो पाया तो ऑप्शन क्या है दूसरा? और ऑप्शन क्या है कि 10 साल तक काम होना चाहिए, उन्हें एडवोकेट होना चाहिए। कहाँ? किसी भी हाई कोर्ट। यस और नो? तो अगर हाई कोर्ट का कोई एडवोकेट है तो उसको क्या कर सकते हैं? हम जज बना सकते हैं हाई कोर्ट का। यस और नो? और अगर वो किसी लोअर कोर्ट का जज होगा तो उसका भी प्रमोशन करा के उसको हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। कुछ सालों पहले तक बेटा ये एक क्लॉज था। लेट मी इरेज दिस पार्ट। 1976 तक there was a clause that a person who is having an exceptional knowledge as a jurist can be appointed as the judge। पर ये क्लॉज बाद में हटा दिया गया। 1976 के 42nd amendment के साथ ये क्लॉज रखा गया था that anyone who is having an exceptional knowledge in the field of jurisdiction shall be appointed, a distinguished jurist can be appointed as the judge। बट ये क्लॉज हटा दिया गया कब? 1978 में जब 44th अमेंडमेंट आया तब ये क्लॉज क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। Because anyone who is an eminent jurist may not be a good judge। This is what it's felt। कि मान लेते हैं कोई एक अच्छा लॉ प्रोफेसर है
तो वो लॉ पढ़ा अच्छे से सकता है, लेकिन वो जज नहीं कर सकता, लोगों को जजमेंट नहीं दे सकता. बट दिस क्लॉज इज स्टिल अवेलेबल व्हेन यू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट. जब हम सुप्रीम कोर्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें ये पॉइंट डिस्कस किया था दैट द पर्सन हु इज अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड jurist, then he can be appointed as the Supreme Court judge. But a person who, in spite of being experienced or a distinguished jurist, he will not be appointed as a High Court judge. ये कब आया? 44th अमेंडमेंट में 1978 में ये स्टॉप कर दिया गया ऐसे अपॉइंटमेंट्स. यस मैम, अगर कोई करप्ट जज होगा और से कोर्ट नोटिस कर दिया उसका, फिर उसने निकाल दिया, फिर उसके आफ्टर कोर्ट के बाद उसका राइट कैसा? कोर्ट के बाद उसका लाइफ नॉट नेसेसरी. एक तो इम्पीचमेंट के लिए उनको निकाल दिया जाएगा कोर्ट से. ही विल हैव टू पे फाइन. ही विल हैव लिसन देन यू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी एक का पहला डाउट क्लियर कर दो बच्चों. तो पहले उसको कोर्ट से निकाल देने के बाद एक सबसे पहले उसको फाइन देना पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली ये केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है, जहाँ पे पैसों की हेराफेरी हुई रहती है, तभी वो इम्पीचमेंट होता है. और अगर सभी मेंबर्स को लगे कोर्ट में और दिस पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर्स को लगता है कि यार दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट अ वेरी ऑनेस्ट जज, तो उसको निकाला जा सकता है. निकालने के बाद सबसे पहली चीज तो पूरे न्यूज़पेपर में जिस तरह से उसका पोर्ट्रेयल होगा, उसके बाद वो कहीं पर भी जाकर ही वोंट बी एबल टू एस्टैब्लिश अ न्यू करियर. उसका करियर इन द लॉ फील्ड सबसे पहली बात तो खत्म हो जाएगी. नोबडी वुड इवन विश टू गो एंड टॉक टू हिम और गिव एनी अदर वर्क और इन सम अदर कोर्ट. दूसरी बात, उसके लाइसेंस को स्टॉप कर दिया जाएगा. जो यहाँ कोई बोल रहा था लाइसेंस की बात, हाँ, तो उसके लाइसेंस को रोक दिया जाएगा. ही विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ इन एनी अदर कोर्ट. तो बेसिकली उसे एज अ जूरिस्ट, एज अ जज, एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट हटा दिया जाएगा. बार काउंसिल का एक लिस्ट होता है बेटा. उस बार काउंसिल के लिस्ट में हर एक एडवोकेट को एक एग्जाम पास करने के बाद लाइसेंस दिया जाता है. वो लाइसेंस उनका एक इसके बिना वो कोई कोर्ट में नहीं जा सकते, वो किसी केस को फाइल नहीं कर सकते. तो आपका अगर नाम उस लिस्ट में आ जाता है एज एन एडवोकेट, तो यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ योर पोजीशन. वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. जिस आदमी का उस नाम आ जाता है उस लिस्ट में, ही इज अ पर्सन ऑफ कंसिडर्ड टू बी एन एडवोकेट ऑफ दिस नेशन. तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश का क्या करे, कानून को संभाले, कानून की रक्षा करे. और रक्षक ही अगर भक्षक हो जाता है तो उस लिस्ट में से उनके नाम को हटा दिया जाएगा. इसका मतलब उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. समझे? फिर वो चाहे तो कुछ और कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, घर पे अपने वाइफ की मदद कर सकते हैं. ये और retirement का you need to see an experience certificate like one thing. Rarely, because they are trying to end his. Rarely अगर मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है बेटा. मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, डिपेंडिंग. अब अगर उससे पहले ही वो सर्टिफिकेट की मांग की और ले लिया तो मिल जाएगा. अगर उसने नहीं किया था, उसे इसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो बाद में इतनी बदनामी के बाद तो शायद ना भी मिले. ओके. नो, he is debarred permanently. Appointment of judges. Chief Justice of a High Court is appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of Supreme Court and the Governor of the concerned state. गवर्नर को आप में से कौन कौन जानते हैं? क्लास की मत भूलिए, क्लास में है. Yes, Bhagat Singh Koshiyari sir is the Governor of Maharashtra. Class. Copy this part everyone fast. Then read from textbook. In your mind, you read the part that I have finished teaching.
लिख लिया बेटा? ऐसी क्या बात है बेटा आपस में कर रहे हो? Yes. So the next part is all eyes towards the whiteboard. जब अगर हाईकोर्ट के किसी चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना होगा तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। उसके लिए दो लोगों का कंसल्टेशन लेना पड़ता है। किसका कंसल्टेशन? एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन लेना पड़ता है और दूसरा जिस स्टेट के आप हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हो उस स्टेट के गवर्नर का परमिशन या कंसल्टेशन लेना पड़ता है। क्यों? I mean that is the state of किस बात की हंसी आई? क्योंकि गवर्नर उस स्टेट का क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड है। उसका अगर आप सजेशन लेते हो तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में आपस में क्या बनेगा? तालमेल बैठेगा। इसीलिए एग्जीक्यूटिव हेड का, और ये तो है ही हमारे देश के कौन? जुडिशियल हेड सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कौन है? सीजेआई हमारे जुडिशियल हेड है। तो दोनों के कंसल्टेशन से आप क्या करोगे? उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करोगे। और जज को अपॉइंट करने के लिए कौन से 3 जन का लेना पड़ेगा? ये दोनों तो सेम है। सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट का कंसल्ट करोगे ही, उस स्टेट के गवर्नर को भी कंसल्ट करोगे और साथ में उस हाई कोर्ट का जो आप जहां भी जज को अपॉइंट कर रहे हो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आप कंसल्ट करोगे। समझे? These 3 things are clear. Any doubt in this part? Online students, did you follow? Yes, ma'am. Take whose book is this? अभी तो हमारे पीछे क्यों गया था?
अगर